Okay, so can we start now? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. My screen is visible to you. Yes, sir, it is visible. Okay, thank you for confirmation. So now we will start because it's already around 5:10. Or should I wait for a few minutes? Okay, so we will start. So today we will discuss in next approx 2 hours case study, structure-based drug designing and ligand-based drug designing. We studied a lot about structure-based drug designing and ligand-based drug designing, and I hope you now able to understand structure-based drug designing, computer-aided drug designing, and many other protein bioinformatics, structural protein, etc., proteomics, etc. Although we are meeting after a long while, initially we studied about computer-aided drug discovery. So today discussion is not about listening; it's about learning something new. It's about performing and learning. I will show you a case study based on drug discovery, computer-aided drug discovery, and structure-based drug discovery. Obviously, these are the projects that either completed or about to complete by my team and by myself. So, for the case study lecture, I choose two projects. One is based on leprosy. So, drug discovery for leprosy. I hope all of you know about the leprosy. And second project is based on MRSA. MRSA is one of the escape organism. The second project that we will discuss as a case study today is basically based on peptide therapeutics. That means we will use peptide as a therapeutic option in this project. And the first one is basically the chemical based drug discovery. We studied a lot about this ligands preparation and all. And in between, I will give you time to execute few of the experiments and understand how it works, right? So usually in example of different lectures, we do only one, two, three job based on the presentations. But in case study, I suggest to take you any one of the protein or one of the disease target and work on this. I understand that in this 2 hour it is not possible to complete these projects because whatever project I am showing is a uh, more or less 1 year or 6 month project. But yes, we can initiate and wherever required, I will give you time to execute. Even after this lecture, you can, submit your report to me that yes, I did this case study along with, today's presentation. And if you have any query, then you can ask later on as well. So better if you are on mobile phone, then better you switch on laptop or computer desktop so that you can perform some experiments, right? So this is the workflow of study. Basically, we use subtractive. We are discussing the first project that is based on Microbacterium leprae,
and we are developing some therapeutic agent or antimicrobial agent for leprosy. And in the beginning of this project, we choose subtractive proteomics analysis for identification of unique metabolic pathway and non-homologous protein related to Mycobacterium leprae. So we all know that leprosy is caused by a microorganism, that is Mycobacterium leprae, right? So for the identification of target protein, we use subtractive proteomics. Subtractive proteomics is nothing that just we filter out proteins as a drug target in any microorganism by uh, you know funneling methods. Just be drop down by our selection criteria and all, right? And one of our selection criteria is non-homologous protein, means जो ह्यूमन स्पेसिस है, बिकॉज हम लोग ह्यूमन के लिए ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं, तो उससे नॉन होमोलोगस प्रोटीन हो, वो प्रोटीन ह्यूमन में absent हो, so that we can minimize the side effect of the drug. So here on this point we can understand that when we are choosing some drug target, then we must choose some non homologous protein. So how we choose it? So at the first point you can see that we identify a unique metabolic pathway that is not present in humans, right? So obviously, if the metabolic pathway is absent, then there is a chance to, non-homologous protein in that particular pathway, right? The second step is prediction of subcellular localization, functional family, and conserved domain of selected protein. So again, this is a validation of target proteins, right? The next step is protein-protein and chemical protein interaction network mapping. Again, we are going for validation of selected protein because we are studying the interactions and all, right? Drug target and vaccine candidate prioritization. So in this project, we try to prioritize, means drug target as well as vaccine target, both of them, right? Then we go for homology modeling and structure validation. If structure of the selected protein target is not available on protein data bank, then we go for homology modeling and then validation of the structures, predicted structure, right? Then again, molecular docking and molecular dynamics simulation for interaction study. So identification and selection of unique metabolic pathway and non-homologous protein. So this table show how we selected the protein, right? So these are the distributions of, listed KEG pathway. I will show this database to you, KEG, and which one is non-homologous protein. We have selected this 5 protein, right? And based on different length and uniprot ID, subcellular localization, etc., we have put over here, right? Now the drug target prioritization. So these are the modeled structure of protein selected for the study, right? These are the active sites predictions through CAST-P server, right? So active site was predicted of the selected protein. Then the Ramachandran plot using ProCheck server and Rampage server was used. This result shows the ProCheck server result. So again, for the 4 proteins selected there. So these are the result. Now the next one is the protein-protein interaction network mapping. So string database is used for prediction of interactions, protein-protein interactions. This chemical protein interactions was predicted using speech search tool.
Okay. Vaccine candidate prioritization is, I will show you the publication as well out of this project. So vaccine candidate prioritization, transmembrane helices present, conserved in different strain, and epitope mapping score greater than 0.8, स्कोर 80% स्पेसिफिसिटी। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने वैक्सीन को प्रायोरिटाइज किया। वैक्सीन कैंडिडेट के लिए ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स प्रेजेंट होना जरूरी होता है। सो वी चूज दीज टू प्रोटीन्स एज अ वैक्सीन कैंडिडेट इन दिस प्रोजेक्ट, राइट। नेक्स्ट, we studied this pi 2 topology predictions for transmembrane helices have been predicted, and adopted topology is shown below for membrane protein and 3 and 4. So this step is for vaccine prioritizations, vaccine target prioritization, prediction of signal peptide using signal IP 4.1 server. So this server is used for vaccine signal peptide prioritization. Molecular docking is performed using Autodock. Molecular docking can be performed using multiple tool, maybe Autodock or maybe SwissDock or anyone, right? And the right hand side image show the leak plot result is for better understanding of hydrogen bond and other interactions. These are the result of molecular dynamics simulation study, RMSD, RMSF graph, and this is the video for simulations study, right? The significant research finding is identification of novel and potential drug target as well as unique vaccine candidate against Mycobacterium leprae. The result from present study could facilitate selecting the Mycobacterium leprae protein for vaccine production pipeline in future. To conclude, reverse vaccinology is justified as a powerful tool for identifying new vaccine candidate. We are quite assured that the study will move forward the research in new effectual direction to cure the deadly disease caused by Mycobacterium leprae. So, first project output I have shown you. So, we will try to take some, I mean, to select some pathway from Mycobacterium leprae using cake pathway database server. Then we will identify some target protein. Then we will go for modeling. Then we will go for validation, structure validations, and then we'll try with docking. Simulation will take time, so that we will not go for simulation in today's lecture. So one case study with the Mycobacterium leprae we will perform today. Try to complete on time. Before going to that, we we are moving to the second case study, that is peptide-based therapeutics for MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, right? So these are the basic introductions of symptoms of MRSA and introductions of MRSA. I hope many of you are aware about drug resistance and escape organisms. So these are the, origin and history of MRSA, and excessive use and misuse of antibiotic lead to mutation in the genetic elements of A. aureus is one of the, very prominent example of drug resistance in microorganisms.
organisms. Okay. Risk of colonization and transmission of MRSA. So basically, MRSA is hospital acquired disease. Hospital acquired diseases are those diseases that we usually encounter through the hospital when we go to hospital, or when we admitted in ICU something. So these are the diseases that we usually get it from hospitals. So mechanism of MRSA is, in this slide we have shown how MRSA, infection. I don't think this is important for us. So, and these slides show currently available treatments. Obviously, there are lots of treatment available now, but due to the drug resistance in the available drugs, we need to discover new drugs. Ongoing current approaches, because available drugs are chemical drugs are showing drug resistance in MRSA. So alternative therapeutics is required, and so that peptide therapeutics is one of the hope in this field. So these are the peptides. You know, there is a APD3 database from where you can get antimicrobial peptides, right? APD3 database. You just note it down and remember. We will check this database as well. And length, charge, isoelectric point, mass, hydrogen number, oxygen number, carbon number. These are the criteria. Based on that, we choose peptides. Okay. Different targets were AMPs, antimicrobial peptide. So बायोफिल्म फॉर्मेशन को चेक करता है, इंटरफेस विथ प्रोटीन फोल्डिंग, immunomodulations, hindrance in cell wall and formations, affect energy metabolism, disruption of cell membrane, suppression of nucleic acid formation, inhibition of synthesis of ribosome. These are the few mechanisms that supposed to be targeted by peptides, antimicrobial peptides. This slide show origin and history of MP. So MP is not, you know, very old therapeutic option. It is recently used. Even just last decade, few of the MPs is available in market as a therapeutic agent. Before that, I don't think it is available, right? AMP applications we talk about, so anti-biofilm, promote wound healing, medical device development, act against MDR. MDR is multiple drug resistance. These are the applications of AMPs. Mechanism of AMP we talk, then based on the target, their mechanism varies, although DNA fragmentation, biodamaging organelle, etc., are the main reason. Models of AMP, these models are named barrel stiff pore, toroidal pore, carpet model, etc. Few of the AMPs naturally present and few are the modified, and few AMPs can be designed in silico. There is a tool available
Using that we can use, right? So objective of this project is selection, design and virtual screening of antimicrobial peptide. सिलेक्शन कहाँ से करेंगे हम लोग? मैंने डेटाबेस बताया आपको, तो वो डेटाबेस से आप कर सकते हैं, इन सिल को आप डिजाइन कर सकते हैं या स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वर्चुअल स्क्रीनिंग करेंगे रेस्पेक्टिव टारगेट के साथ में, पेप्टाइड प्रेटाइजेशन एंड सेलेक्ट ऑफ selected AMPs to perform protein docking to check affinity, perform molecular dynamics simulation of selected complex to explore the dynamics of peptide binding with target proteins. These are the workflow for this project. So first and foremost thing is to identify the target protein. So the target protein is PB2A and PBL toxin. We selected these two peptides proteins as a target. Then analysis of target protein and active site predictions. We can say validation of selected target protein. Select, and then selection of AMP from database. In silico de novo designing of AMP. Either we will choose the AMP from the database or we will design it in silico tools. Using in silico tools. So selection, designing, screening, and tertiary structure prediction of antimicrobial peptide. And then finally, molecular docking study for interaction study, and then molecular dynamics simulation. So, I mean, this project can be concluded in this slide. Crystallographic structure detail of target protein. So, the target protein was PVL2 and PVL toxin and PB2A. So, this structure can be found out using this protein database. PeptiMap server for active binding site prediction was used. Okay. So this is the home page of PeptiMap server. You can note it down in your notebook. Okay. PyMol software for molecular visualization. PyMol, many of you have used this software. PyMol is basically used for molecular visualization. Any protein or peptide can be visualized. Visualize means हम उसको देख सकते हैं सॉफ्टवेयर पे, उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, तो PyMol is used for that, right? APD3 database be used for finding out AMPs, right? Any of the anti-TB peptide database for the retrieval of antimicrobial peptide. These are again one of the database like APD3. PepDraw server for designing of antimicrobial peptide. Means in silico designing can be done using PepDraw server. Okay. So you can note it down, PepDraw server. आप इसको ट्राई कर सकते हैं. For three-dimensional structure prediction, eye tester can be used. Okay. AlphaFold 2 also used for prediction of structure of peptide. Okay. For the prediction of physiochemical property, XPASI was used. Toxin trade software is used for toxicity predictions of antimicrobial peptides. Okay. HemoPI is hemolytic peptide identification server. Few of the peptide basically hemolytic in nature. So when we use peptide as a therapeutics, then we precautionary check this HemoPI as well.
I will send you PPTs so you can try these softwares. Okay. For the prediction of bioactivity, peptide anchor was used, right? Bioactivity can be used, predicted using peptide anchors. For the anticipation of water solubility, Innovagen is used. These are the chemical property predictions. Allergenicity of antimicrobial peptide is anticipated using allergen FP. Peptide may cause allergy, so allergenicity is predicted using allergen FP. Net wheels is peptide helical wheel and net projection makers. Okay. Pep wheel is for helical wheel representation of peptide sequence. Preparation of target and ligand molecules. So UCSF chimera is used for. And molecular docking of target protein and antimicrobial peptide is done using HDoc server. जो ऑटोडॉक है एंड स्विसडॉक है, ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो केमिकल एंड प्रोटीन डॉकिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, बट प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप है. एंड फ्रीवेयर में ऑनलाइन सर्वर में एचडॉक सर्वर इज वन ऑफ द गुड वन और बेस्ट वन. तो एचडॉक सर्वर इज यूज्ड फॉर दिस स्टडी, राइट. So today we will try this HDoc server as well, because many of you have tried chemical protein docking server or software, but maybe HDoc is new to you. Gromex is used for molecular dynamics simulation. There are many software and tools are available for simulation study like Amber, Gromex, and commercial softwares of Discovery Studio and Schrodinger is also available for simulation study. But the Gromex is freeware. It is free, entirely free, and is accepted, most accepted one. And the community of Gromex is also very, strong community. So if you have any query, if you have any problem, then there is a support system for Gromex. So for freeware, Gromex is good one. बाकी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर थोड़े इजी और होते हैं, और but you know if you want to use freeware, then Gromax is good. So these are the steps of Gromax morphodynamic simulation study. Like first you need to generate topology, then need to add ions, equilibrium analysis, define box and solve it, energy minimization and production MD. Gromax के लिए इसके ट्यूटोरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, एंड स्टेप टू स्टेप गाइड है, इज वेरी इजी. जस्ट टू फॉलो दैट ट्यूटोरियल एंड यू कैन एग्जीक्यूट. बाकी ट्रबल शूट बीच में आपको करने पड़ेंगे. सो काफी इजी है ग्रोमेक्स, आप एक बार जरूर ट्राई करना. BMD is used for making movie of simulation study, right? So these are the result part now. You can see that PB2A 1BQQ PDB-ID was used in this study. So you can note it down, and may you can try with this protein in your case study. Okay. So total 6
active binding site were anticipated using PeptiMap server, visualization of molecule using PyMol. Okay. These are the active binding site predictions of PB2 and PVL toxin, site 1, site 2, site 3, site 4, site 5, and site 6. These are the amino acids along with their position. ये जो नंबर है 149, 150, these are the position of amino acids. So active binding sites predictions, right? Another target protein is PVL toxin. So the same PVL toxin PDB ID is 6U33. Okay. Again, active site predictions using PeptiMap server, active binding site. Now the peptide selections. So a total 150 AMPs, antimicrobial peptide, were selected from APD3 database, right? And categories were selected: antibacterial peptide, anti-tuberculosis peptide, anti-cancer peptide, anti-HIV peptide, and anti-parasitic peptides. So these are the selection criteria. अब डेटाबेस अभी जब हम लोग देखेंगे तो उसमें क्राइटेरियाज आप देखेंगे, डिफरेंट क्राइटेरिया से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. So the selection of potential drug candidate was done based on physiochemical properties and highest docking score. ये जो 150 हमने पेप्टाइड सिलेक्ट किए हैं, इनके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और बाइंडिंग एफिनिटी जिसका ज्यादा है उसको हमने सेलेक्ट किया. आउट ऑफ दिस टोटल 4 पेप्टाइड वेयर शॉर्ट लिस्टेड and these are the name of that, and from these 4 clavin B was found to be the most suitable drug candidate. These are the parameters. Based on that, we selected the clavulin B. The peptide structure is shown here. Peptide sequence is shown below. Okay. And these are the structure predicted using iteration and AlphaFold algorithm. AlphaFold 2 is AI based tool. मैंने आपको पहले भी बताया था. Molecular docking was performed. Okay. And you can see the binding of. Then the MD simulation result is here. So almost the binding is stable. These are the videos of MD simulations, but probably this will not play here. And the same with the PVL toxin. Okay. Means same 150 जो selected peptides है उसको हमने इसके साथ डॉक किया. Okay. Now the second part of the project is in silico designing of peptides. So PepDra server was used for in silico designing of peptides. Total 52 peptide sequence were designed using PepDra server. Okay. Out of 52 peptide sequence, this was selected as it fulfilled all the criteria for being potential drug target, potential drug candidate. Okay. These are the parameters for selected peptide. This is the structure of AlphaFold 2, molecular docking. Okay. These are the interactions. This one is the simulation result. Same with the PVL toxin second target.
So these are the summary of this project. And this is the publication out of this project. Okay. So how many of you understand this? Because now we are moving to execution part. Not entire project, but few of the key steps we will, you know, execute here. So have you understand this project, these projects? Okay. So we will start with, have you performed modeling, protein modeling? Anyone can answer? आपने अभी होमोलॉजी मॉडलिंग या प्रोटीन मॉडलिंग परफॉर्म किया है? No, sir. ओके, ओके, ठीक है. सो बेटर बी स्टार्ट विथ protein modeling, and then we will go for PDB, uh, and we will download some structure from there as well. तो इतना तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे हम प्रोटीन टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं. प्रोटीन कोई भी प्रोजेक्ट हम कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि सबसे पहले किसी भी ड्रग, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग के लिए हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर एज ए ड्रग टारगेट रिक्वायर्ड होता है. और प्रोटीन स्ट्रक्चर जो भी एज ए ड्रग टारगेट हम सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो नॉन होमोलोगस हो तो बेटर है. और जिस किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें यूनिक पाथवे हो और वाइटल पाथवे भी हो. कोई ऐसा पाथवे जो उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत वाइटल नहीं है, जरूरत नहीं है उसका, वो उसके बिना भी सरवाइव कर सकता है. तो ऐसे प्रोटीन को टारगेट करके हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग डिस्कवरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सरवाइव कर जाएगा नहीं. सो इस इट्स लाइक सेम सेम थिंग, जस्ट यू नो anything that can kill the bacteria or microorganism, we choose that target protein, right? And नॉन होमोलोगस होना चाहिए सो दैट वो साइड इफेक्ट कम करे. अब वो सेम प्रोटीन अगर ह्यूमन में भी प्रेजेंट है, तो वो साइड इफेक्ट ज्यादा होगा, मीन्स वो नुकसान करेगा ना, अपने जिसके लिए हम लोग ड्रग ले रहे हैं तो नुकसान करेगा. सो उसको भी हम सिलेक्ट करते हैं. ये क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का. फिर जैसे हमने प्रोटीन जब सिलेक्ट कर लिया, तो दो ऑप्शंस हैं. या तो वो जो टारगेट प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर अवेलेबल है ऑलरेडी, एनएमआर या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो वो हम प्रोटीन डेटा बैंक से वहां से ले सकते हैं स्ट्रक्चर को, और उस स्ट्रक्चर को फर्दर वैलिडेशन करके अपने स्टडी में वर्चुअल स्क्रीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग मॉडलिंग यूज करते हैं, स्ट्रक्चर मॉडलिंग करते हैं, मे बी होमोलॉजी मॉडलिंग यूजिंग स्विस मॉडल सर्वर, या आजकल एआई बेस्ड सर्वर है अल्फा फोल्ड 2, तो उसको भी, अल्फा फोल्ड भी हम यूज कर रहे हैं. 2 3 इसके वर्जन है जो भी. सो अल्फा फोल्ड भी हम यूज कर रहे हैं एज ए मॉडलिंग. सो फर्स्ट वी विल गो विथ द स्विस मॉडल सर्वर, राइट? So I'm sharing my screen. I will take questions. Chat में कुछ questions भी हैं. So I will take these questions later on. Okay.
So I am sharing my screen, and along with me, you will also perform. Okay, sir. तो सिंपली गूगल पे हमने स्विस मॉडल सर्वर सर्च किया, and we are now landing to the Swiss model server web page. So home page is like that. You can check here that is fully automated protein structure homology modeling server accessible via Expressi web server, right? तो Expressi से भी इसके लिंक है, हाइपर लिंक। Expressi आप लोगों में से मैंने दिखाया था शायद लास्ट लेक्चर में आप सबको। तो दिस इज नथिंग कॉम्प्लेक्स, सिंपली आपको होम पेज पे ही आप देख रहे हैं कि स्टार्ट मॉडलिंग ऑप्शंस हैं। आई होप आप लोग भी इस पेज पे लैंड कर रहे होंगे। तो क्लिक ऑन स्टार्ट मॉडलिंग। ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं मॉडलिंग के लिए, ठीक है। जो आपने टारगेट प्रोटीन सिलेक्ट किया है उसका सीक्वेंस आप ले सकते हैं। सीक्वेंस प्रोटीन सीक्वेंस कहाँ से लेंगे आप? प्रोटीन सीक्वेंस जो भी सीक्वेंस डेटाबेस है, लाइक यूनिप्रोट है, एनसीबीआई में भी अवेलेबल है, तो वहां से आप प्रोटीन सीक्वेंस ले सकते हैं। तो जो भी आप प्रोटीन एक चूज करें, उस प्रोटीन को आप यहाँ से मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे अभी लर्निंग के लिए सीक्वेंस एग्जाम्पल अवेलेबल है, तो आप यहाँ से सीक्वेंस ले सकते हैं। सिंगल टारगेट एग्जाम्पल हमने लिया, तो ये भी एक ऑप्शन है। आप चाहें तो कोई भी सीक्वेंस एनसीबीआई या यूनिप्रोट से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एनसीबीआई से ले रहे हैं। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? Yes, sir. Yes, ओके। sir. Sir. आप चाहें तो पीबीएल टॉक्सिन भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, या और भी कोई प्रोटीन। और फिर मैंने ये लिया, मैं बता रहा हूँ एनसीबीआई से ले सकते हैं आप प्रोटीन सीक्वेंस। फास्टा फॉर्मेट में आप कॉपी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से हम फास्टा फॉर्मेट में गए। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें में भी टाइम लगेगा, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके भी वहां मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन्हीं प्लॉट से भी ले सकते हैं। जो भी प्रोटीन आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। Sir, what is protein clusters? प्रोटीन क्लस्टर आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स
बार फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कई प्रोटीन क्लस्टर में काम करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं, यूनिप्रोट या एनसीबीआई से। तो we again come back to the Swiss model server. If your sequence is right, then you will see this kind of color coding in the input area. अगर आपके सीक्वेंस में सपोज इसमें आपने डीएनए आरएनए का सीक्वेंस अगर कॉपी कर दे रहे हैं या कोई भी गलत सीक्वेंस अगर कॉपी कर रहे हैं तो ये कलर कोडिंग नहीं आएगा। तो ये भी एक चेक पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और ईमेल आईडी आप अपने यहाँ दे सकते हैं। जब ईमेल आईडी देने से आपके रिजल्ट जो है मेल पे चला जाएगा। तो एक ये भी ऑप्शन है। अब दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है स्विस मॉडल सर्वर। एक तो कि सर्च फॉर टेम्पलेट, आप पहले टेम्पलेट सर्च करेंगे। और टेम्पलेट क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज टेम्पलेट? एनीवन कैन आंसर? आर यू अंडरस्टैंडिंग टेम्पलेट? नो सर। ओके, अभी मॉडलिंग नहीं पढ़े हैं आप लोग? मॉडलिंग नहीं बताया गया है? होमोलॉजी मॉडलिंग पढ़े हैं इस क्लास मतलब इस लेक्चर में? नहीं, ठीक है। सो होमोलॉजी मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन टेम्पलेट। टेम्पलेट मॉडलिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन हम मॉडल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एक टेम्पलेट चूज करते हैं। टेम्पलेट का मतलब उस सीक्वेंस से मिलता जुलता सीक्वेंस का स्ट्रक्चर जो अवेलेबल है वो चूज करते हैं और उस टेम्पलेट के बेसिस पे मॉडलिंग होती है। आप ऐसे समझ लें कि फॉर शेड आपको कोई भी मूर्ति बनानी है तो आप उससे मिलता जुलता कोई मूर्ति रखते हैं अपने पास और उसे देख करके नया न्यू मूर्ति आप बनाते हैं। सो काइंड ऑफ थिंग होमोलॉजी मॉडलिंग। एक सिमिलर सीक्वेंस का स्ट्रक्चर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को देख करके ये होमोलॉजी मॉडलिंग होती है। सॉफ्टवेयर उसको टेम्पलेट बोलते हैं हम लोग। इस टेम्पलेट सिंपली हम लोग कहीं भी टेम्पलेट लेते हैं। कहीं भी आपने इमेज ड्रॉ करते हुए देखा होगा तो एक एज ए रेफरेंस हम लोग यूज करते हैं टेम्पलेट को। तो हाँ इसमें सर। दो ऑप्शंस हैं, या तो यस यस। सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होता है टेम्पलेट्स। हाँ हाँ, दिस इज डिफरेंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ठीक है, हम बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें सीक्वेंस सिमिलरिटी के बेसिस पे हम टेम्पलेट चूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है क्या, तो टेम्पलेट आप मैनुअली चूज करें या ऑटोमेटिकली बिल्ड मॉडल में जा सकते हैं। ओके सर। तो फर्स्ट हम लोग सर्च टेम्पलेट में जाते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं और इजी में समझाऊं टेम्पलेट को। स्विस मॉडल मॉडलिंग में, होमोलॉजी मॉडलिंग में, कि सपोज हमने एक प्रोटीन लिया पीवीएल टॉक्सिन ऑफ एमआरएसए, राइट? एंड स्ट्रक्चर ऑफ पीवीएल टॉक्सिन एमआरएसए इज नॉट अवेलेबल in PDB data bank or something, but structure of PVL toxin in some other organism is available. So what this software will do, because the sequence similarity is more or less same in both of the organism, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है सीक्वेंस में प्रोटीन की, बहुत मिनिमम उसमें ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। तो जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है उस स्ट्रक्चर को एज ए रेफरेंस लेकर के और ये माइक्रोबैक्टीरियम ये एमआरएसए के लिए मॉडल कर देगा स्ट्रक्चर को। अगर वो प्रोटीन भी अवेलेबल नहीं है कहीं स्ट्रक्चर उसका, तो उस प्रोटीन से मिलता जुलता अगर स्ट्रक्चर कहीं पे उस फैमिली से या उससे रिलेटेड सीक्वेंस अगर है तो उसको लेकर के इसको मॉडल कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी ये रन कर रहा है। हाँ, आप ऐसे समझिए इस चीज को और होमोलॉजी मॉडलिंग का, कि जैसे स्केचिंग करते हैं, स्केच करता है जो स्केच बनाता है कहीं पे, तो कंप्लीट अगर इमेज नहीं अवेलेबल है तो थोड़ा थोड़ा दो तीन जगह से वो स्ट्रक्चर लेकर के, वो आइडिया लेकर के और स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। सो बेस्ड ऑन होमोलॉजी ये मॉडलिंग करता है। ठीक है सर। और जो अल्फा फोल्ड है
वो एआई बेस्ड मॉडल है। सो वहां भी मॉडल वो क्रिएट कर रहा है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां भी वो मॉडल क्रिएट कर रहा है, और उस मॉडल से मैप कर रहा है फिर आपके जो अननोन प्रोटीन सीक्वेंस है उसका। सर अल्फा फोल्ड मैंने किया है कहीं सर। भी जो प्रेडिक्शंस है। यस। अल्फा फोल्ड सर मैंने फास्टा सीक्वेंस कॉपी करके वो अल्फा फोल्ड में मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सर, देखा है। हाँ, तो कर सकता हूँ। व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज इंद्रनील कर्मकार सर। ओके, सो वी वेट फॉर फ्यू मिनट, सर जस्ट मेरा हो वी गया आर सर। गेटिंग द, हाँ बट वी वेट फॉर, ओके सर। दिस इज रनिंग। कौन सा सीक्वेंस लिया आपने? सर आपने जो देखा था ना एनसीबीआई में, डिहाइड्रिन सर। ओके, बाकी लोग भी कर रहे हैं ना? हम्म। Yes, sir. ओके, सो दीज आर द टेम्पलेट्स। ओके, दीज आर द टेम्पलेट। अदर मोरालेस ये जो टेम्पलेट जो टॉप रैंक्ड होते हैं, दैट इज बेटर। आप चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज करके भी सीक्वेंस आप मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ये टेम्पलेट का स्ट्रक्चर है, आपका मॉडल नहीं है। तो हमने चेंज किया, फर्स्ट नहीं लेके हम थर्ड ले रहे हैं, ठीक है? थर्ड ले लिया हमने, एंड नाउ वी विल गो फॉर द बिल्ड मॉडल ऑप्शन। ओके, वेट ओके फॉर अ सर। मोमेंट।
सर यू आर नॉट ऑडिबल। Okay, so that my screen is visible नो No, सर। sir. now. यस सर। Okay, so we can see that we are done with the modeling. So here we can check that there is options or model 2, model 1. There is options or model 1, model 2. Usually the top rank is model 2, or we can compare. And these are the few scores of GM, QE, QMIN score, etc. These are score is this score is best. I mean for this server only. कोई universal score नहीं है. So every server, design some score for their ranking. So usually this is good. I mean more than six. I mean point 0.6 our structure are good, and the respective ligand is also shown here. We can check here that ligands options is there. Template was also the all information of the modeling is there. You can download the file as well, display the file. These are the options. So explore entire this server window. You can change the pattern, different pattern like cartoon. This one is the cartoon pattern. So we can change it. ओके सर। Okay. और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन पे फॉर शेड। मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, मीडियम हाई लो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया आपका स्क्रीनशॉट। आप वहां इसको चेक कर सकते हैं। प्ले का ऑप्शन है, विजुअलाइजेशंस का आप देख सकते हैं कहाँ क्या बाइंडेड है नहीं है। सो दिस आर द गुड प्लेटफॉर्म्स राइट। एंड आप डिफरेंट अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कवरेज एंड ऑल बता रहा है कि सीक्वेंस आइडेंटिटी कितनी है, कवरेज कितनी है। सीक्वेंस आइडेंटिटी मींस टेम्पलेट का सीक्वेंस, और जो आपकी क्वेरी सीक्वेंस है, क्वेरी सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो सीक्वेंस का आप स्ट्रक्चर मॉडल करना चाह रहे हैं। सो सी इसमें कोई क्वेरी लिमिट सीक्वेंस, है सर? पैटर्न प्लीज। सर सीक्वेंस आइडेंटिटी में कोई सर लिमिट है, मतलब 40% से नीचे होगा या ऊपर होगा तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ऐसे करके? 30% से ऊपर यूजली लोग मानते हैं गुड है, अच्छा है, ठीक है, 30% ओके तक। सर। तो उसमें कवरेज एंड ऑल उस पर भी डिपेंड करता है कवरेज कितना है, बट यूजली गुड है। बाकी फिर स्ट्रक्चर वैलिडेशन में हम लोग चेक करते हैं, या फिर आजकल अल्फाफोल्ड का भी ऑप्शन है, उससे भी करके और हम लोग कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर, जिसका बेटर है उसको हम लोग करते हैं।
ये तो काफी नॉन प्रोटीन है, एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल फाइल है, तो अच्छा ही इसके लिए। तो बाकी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ एडिट करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर को कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्ट्रक्चर असेसमेंट का एक ऑप्शन है ना, मॉडल 2 में टॉप पे ही बिल्कुल। तो इसमें आप जो स्ट्रक्चर वैलिडेशन की हम लोग बात कर रहे थे, असेसमेंट की, आप ये स्ट्रक्चर कितना वैलिड है उसको भी आप कर सकते हैं कंपेयर। जैसे रामाचंद्रन प्लॉट आ गया, ठीक है। और इसमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं दो दो तीन उसको, क्यूमिन स्कोर आ गया, आरएमएसडी वगैरह है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इंटरेक्शंस एंड ऑल आपको डिफरेंट अदर टूल से करने होंगे। सो वी हैव डन विथ द मॉडलिंग। सिमिलरली आप अल्फा फोल्ड से भी ट्राई करना। और भी कुछ टूल्स हैं, जैसे स्टैंड अलोन टूल्स में मॉड्यूलर्स है, उससे भी कर सकते हैं। एंड नाउअडेज AI based many tools are available, so we can do it. Okay, now next one is the protein protein interaction under the validation part. So string database can be used for that. What structure you have model, जो स्ट्रक्चर आपने मॉडल किया उसी स्ट्रक्चर को, उसी का पीडीबी फाइल लेके आप यहाँ स्ट्रिंग डेटाबेस में यूज करेंगे। सो जिनके पास स्ट्रक्चर आ गया है वो इसमें करें। सिंपली होम पेज है स्ट्रिंग डेटाबेस का, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस का, आप इसको कर सकते हैं। आपके पास जो सीक्वेंस है, या तो आप उसका नाम डालें या सीक्वेंस यहाँ पे कॉपी करें जो प्रोटीन आपने लिया है वो। मैं एग्जांपल फाइल के साथ मूव कर रहा हूँ। ओके, ये पब्लिकेशन है जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था उसका। तो ये पब्लिकेशन मैं शेयर करूंगा आपसे। इसमें जो मेथड मेथड्स यूज किए हमने, वहां पे हमने आउटकम दिखाए थे, मेथड मेथड का ओवरफ्लो दिखाया, ओवरव्यू दिखाया था मैंने आपको। तो आप यहाँ से इसको और समझ सकते हैं, ठीक है। ने अच्छा जर्नल में पब्लिश हुआ है पेपर। सो आई मीन दिस केस स्टडी बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एज वेल, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग लर्न कर रहे हैं, sometimes it's look very simple like modeling and this many things, but this can be translated into publications as well. स्ट्रिंग का ये डेटा है यहाँ पे जो इस पब्लिकेशन में है, ये राउंड 2 इम्पैक्ट फैक्टर है इस पेपर का। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये रिजल्ट है सिमिलरली यहाँ पे, और यहाँ पब्लिकेशंस में भी है। सो द थिंग इज कि आइडिया कंसीव करना और एग्जीक्यूट करना और एनालिसिस करना किसी भी पब्लिकेशंस के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए, आपको कंप्लीट करने के लिए 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है टू कंसीव द आइडिया। आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, ठीक है। आइडिया के लिए आप मेंटरशिप भी ले सकते हैं, कोई मेंटर चूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग एग्जीक्यूशन पार्ट है, आपको एग्जीक्यूट करना आना होगा। एग्जीक्यूशन तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे भी। और द थिंग इज कि आपको डिफरेंट जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको जोड़ना होगा। जैसे हमने होमोलॉजी मॉडलिंग अलग से पढ़ी, प्रोटीन स्ट्रिंग डेटाबेस अलग से पढ़ा, डॉकिंग अलग से पढ़े, सिमुलेशन अलग से पढ़े, इन सबको जोड़ना होगा सीरीज में। एंड देन एनालिसिस, आपको रिजल्ट एनालिसिस आना चाहिए, और उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं अपने मेंटर, रेस्पेक्टिव मेंटर से। और आप इसको अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पेपर में, पेटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें आपके एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट भी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री है सारे सॉफ्टवेयर्स। तो द थिंग इज कि
आपको टाइम देना होगा। सो आई सजेस्ट कि आप अभी से आइडिया कंसीव करें, और along with this कोर्स आप उस आइडिया पे वर्क करें। तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स along with the certificate and learning you will have some result as well that can be translated into publication or patent. So that will be good for your career. Okay. सो ये स्ट्रिंग का रिजल्ट है। आप 5 मिनट्स है आपके पास। आप में से जो लोग ने मॉडल किया स्ट्रक्चर को, उसी स्ट्रक्चर को स्ट्रिंग डेटाबेस में सर्च करें और ये नेटवर्क, प्रोटीन नेटवर्क बनाए। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसको भी एक्सप्लोर करें आप, जैसे एनालिसिस, एक्सपोर्ट। डिफरेंट फॉर्म में आप इसको, इस स्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो 5 मिनट्स फॉर दिस स्ट्रिंग डेटाबेस। सर वहां से मतलब प्रोटीन का नाम लेना है। नेम एंड सीक्वेंस, ओके सर। और वो टेम्पलेट ऑटो डिटेक्ट करेगा, और उससे ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑटो डिटेक्ट करेगा। ओके। आप दे भी सकते हैं।
Okay. So I hope many of you done with modeling. Okay. यस सर. Hmm. Yes, sir. So the next task is to perform docking. Okay. For docking, we can use multiple docking tool like Autodock, SwissDock, etc. But SwissDock is online server, so I suggest you to go with the SwissDock. Okay. ओके सर. Now you can choose, the example file over here just to explore this SwissDock server, or if you have protein with you and ligand name, then you can go for the ligand. Ligand, if you are not confirm कि ligand क्या होगा इसका, तो आप कोई भी रैंडम केमिकल मॉलिक्यूल ले सकते हैं जिससे आप इसको पबकेम से पोर्ट्रेट कोई भी, और उसके साथ आप डॉक करके देखिए. आपको तो बेसिकली टूल सीखना है अभी, तो आप इससे कर सकते हैं. ठीक है. या ये जो पेपर है, इस पेपर से जो लिगेंड इसमें है और प्रोटीन है वो आप ले सकते हैं. ठीक है. So go with Swiss doc server. Then in the chat box, I have seen one query regarding the physiochemical property predictions. So prot param can be used for physiochemical property prediction. So prot param. Uh, One of the student asked about this. So in the upcoming 5 to 6 minutes, prot param and Swiss doc, two software you need to explore. Okay. दो आपने कर लिए, एक स्ट्रिंग और एक होमोलॉजी मॉडलिंग. आई विल ट्राई 5 to 6 टूल टुडे. ये 5 से 6 आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लें, बाकी हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट टाइम. तो स्विस डॉक एंड एक्सपेसी के बाद, प्रोटपरम के बाद, वी विल मूव टू द peptide therapeutics part. Means we will check some peptide database and all, because hardly we have half an hour, 20 minutes. So go for that quickly. Swiss doc server and protoparam. Another is drug rape. Drug rape for virtual screening. Although it is time taking, but at least you bookmark this, server and you use later on. Drug rape. Okay. So three, protoparam, Swiss doc and drug rape. ड्रग रेप जस्ट आप उसको देखो एक बार, और बाकी मैं इसका Sir, can you show H doc?
Sir, ligand preparation and target preparation will be done automatically in SwissDoc by itself? चार्ज ही तो है, चार्ज तो सुनो एक सेकंड। चल শুনো 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 খালি ফোনটা কাট। আরে বাবা এটা আমাকে লোকের দেশান চার্জ গেছে কেউ দেখলাম মানে তাড়াতাড়ি 10 এদিকে ওদিকে এদিকে দেবো এদিকে দাও এদিকে থেকে বেশি ভালো ওটা Okay. So Sir, in SwissDoc, there is prepare target and prepare ligand options. uh, yes, So previously we have done docking of one PEP1 and saute C protein. mhm. So trying for the same. Uh, in the submit a ligand, provide a smile is there. I entered peptide like peptide symbol directly. So is that fine? Uh, um, your name is Siva Bhargavi. Yes, sir. So Siva, this Swiss doc is for protein and chemical ligand docking server, right? Okay. So peptide will not work here. For peptide, you can choose HDoc server. Probably HDoc server is down ব্যাপার right পেয়ে গেছে now because I tried. আমার একটা কলম দে না তুই আমি তো পাগল হয়ে Um, যাবো রে Gayatri, you turn off your mic. Gayatri, you turn off your mic. Okay. So HDoc server is for protein and peptide docking. You may try after some time. I was about to show you, but it seems that the server is down right now. Okay. I So am Swiss doc chemical ligand is required. So you can choose any of the chemical ligand either in a smile format or mode 2. जैसे मैंने पीडीबी टारगेट इनका ही चूज किया एंड हमने एक इनका चेन सेलेक्ट किया एंड चूज हेट्रो एटम्स नन चूज किया कोई भी हेट्रो एटम नहीं लिया मैंने एंड प्रिपेयर टारगेट किया ठीक है आप भी ऐसे कर सकते हैं ट्राई सिमिलरली लिगेंड में हम लोग यहाँ पे स्माइल ले सकते हैं किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल का जैसे मैंने यहाँ पे ये स्माइल लिया मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ये है इसलिए आ रहा है मैंने कभी यूज किया होगा तो आप इसको स्माइल फॉर्मेट पबकेम डेटाबेस है मैंने बताया होगा आपको पहले जब मैं स्केचिंग बता रहा था तो पबकेम डेटाबेस से कोई भी लिगेंड केमिकल आप ले सकते हैं ठीक है ये देखिए पबकेम डेटाबेस है यहाँ से आप ले सकते हैं और हमने ये प्रिपेयर्ड लिगेंड किया है यहाँ पे
Sir, what happens in prepared ligand? Like, does it add any hydrogen bonds or remove water molecules like that? Yes, basically they add some ion charges, etc., to just mimic the natural environment. And basically this is the environment setup. आप कोई भी स्टैंड अलोन भी अगर करते हैं जैसे ऑटोडॉक करते हैं तो उसमें भी हम एटम ऐड करते हैं। तो और भी है कुछ जो अननेसेसरी एलिमेंट्स है स्ट्रक्चर से उसको रिमूव करते हैं और इसमें डॉकिंग करते हैं, डॉकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। वी आर वेटिंग फॉर प्रिपेयरिंग लिगेंड एंड स्ट्रक्चर। हालांकि इसका नेक्स्ट स्टेप फिर इजी है, ये लिगेंड और ये अगर प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप डिफाइन बॉक्स करके और इसको जस्ट आगे सबमिट कर सकते हैं। स्टार्ट डॉकिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ आप अपना डाल के और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम होप कि आप अपने एक प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे मुझे। आज आप अपना कोई एक प्रोजेक्ट डिसाइड करो, किसी भी सीखने के ही, अगर मान लो पेपर हो जाए अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक कोई डिजीज जो भी आपका इंटरेस्ट है, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस या एस्केप ऑर्गेनिज्म जो भी है, एस्केप ऑर्गेनिज्म जानते होंगे आप में से कई लोग, जैसे हमारे से है एक क्लेप्सिला है, इनमें से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का। और जो मैंने प्रोटीन सिलेक्शन के मेथड्स बताए उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सेलेक्ट करके और आप प्रोसेस कीजिए और देखिए आप कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, किस तरह का रिजल्ट। एक्चुअली क्या है, जब तक आप रियल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे जो चैलेंजेस हैं वो नहीं सीखेंगे उसको ओवरकम करना। और आई मीन नाउ डेज इट इज वेरी इजी। आपको जो प्रॉब्लम है आप गूगल कीजिए और उसके आपको जो सॉल्यूशंस हैं मोरलेस मिल जाते हैं। नहीं मिल रहे हैं आप डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स से, मेंटर्स से, टीचर्स से। सो लर्निंग प्रोसेस ऐसे इफेक्टिव लर्निंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप मिड ऑफ द सेशन है इस लेक्चर सीरीज के, तो बेसिक्स तो आपने काफी पढ़ लिया। थोड़ा आप एजुकेशन पार्ट पे भी वर्क कीजिए। हालांकि दिस लेक्चर सीरीज इज प्लान इन अ वेरी वेल वे कि हर एक लेक्चर के बाद 1 घंटे का आपको हैंड्स ऑन सेशन रखा गया है। बट रियल प्रोजेक्ट पे भी काम करना शुरू कीजिए। अभी अगर करेंगे आप 70-60% भी रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर ले रहे हैं सक्सेसफुली, तो आगे जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है? Sir, can you share the paper in the WhatsApp ये group? टाइम ले रहा है अभी। यस, और आई कैन शेयर इन द चैट बॉक्स एज वेल। अभी लास्ट में सेशन क्लोज होने के पहले मुझे रिमाइंड करवाना, तो मैं भेज दूंगा आपको, यहाँ पे चैट बॉक्स में भेज दूंगा। ओके सर। So it is taking time. So we are moving to the next tool, that is एक्सपेसी प्रोट परम। तो चैट बॉक्स में किसी का क्वेरी था फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, यहाँ पे भी आप अपना कोई भी सीक्वेंस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या यूनिप्रोट आईडी जो है वो आप यूनिप्रोट आईडी से भी कर सकते हैं कंप्यूट। और पेप्टाइड का जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है उसके प्रेडिक्शंस के अलग टूल्स में बताए थे उस समय, तो उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट अ क्लिक अवे। आप देखिए यहाँ पे ये आपको प्रेडिक्शंस बता रहे हैं, तो आप कर सकते Sir, the question is related to phytochemical.
Phyto, Acha, not for the protein, phyto. Hmm. phytochemicals. Hmm. So I don't remember exactly, but there is a must be available some tool for prediction of phytochemical properties. Or if not there, then database of phytochemicals. You can search for databases, and maybe that database include the information of their physiochemical properties. So you can search in a way, right? और मैं देख करके आपको बताऊंगा. Okay, so this tool is for physiochemical property prediction of protein. Okay. आपने जो प्रोटीन मॉडल किया है उसका इसमें ट्राई कर सकते हैं. ये फाइटोकेमिकल्स के लिए आपको याद हो, जो मैं पबकेम बता रहा था, तो केमिकल्स के लिए एडमिट प्रॉपर्टी प्रेडिक्शंस के लिए मैंने बताया था स्विस एडम. कैन यू हियर मी? हेलो. तो आप स्विस एडम से भी फाइटोकेमिकल्स इज बेसिकली अ केमिकल कंपाउंड रिलेटेड टू प्लांट्स. तो उसके आप स्विस एडम सर्वर से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके सर। समझ रहे हैं? जैसे फाइटोकेमिकल्स भी अल्टीमेटली केमिकल्स ही हैं, और एडमिट प्रॉपर्टी हमने केमिकल्स के ही प्रेडिक्ट किए थे, अगर आपको याद हो तो. हैव यू रिमेम्बर दैट स्विस एडम? यस सर। यस और नो, शिवा? यस सर, यस। ओके. आप वहां से कर सकते हैं. We are moving to APD3 database and microbial peptide database. एक ड्रग रेट मैंने बताया, मैं भूल गया. सो ड्रग रेट इज बेसिकली फॉर वर्चुअल स्क्रीनिंग. अभी यहाँ पे ये सर्वर भी नहीं ओपन हो रहा है. तो ड्रग रेट जो है उसमें आप स्ट्रक्चर बेस्ड एंड लिगेंड बेस्ड स्क्रीनिंग कर सकते हैं. मींस रिसेप्टर्स जो है प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर या पीडीबी आईडी डाल के और रेस्पेक्टिव लिगेंड को सर्च कर सकते हैं. ड्रग रेप, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लो और इसको ट्राई करना आप. ड्रग रेप ये ओपन नहीं हो रहा है. कोई चाइनीज लेबोरेटरी उसके ये टूल्स हैं, काफी अच्छा है. यू मेड दिस.
APD3 database, have you explored that? No? No, sir. No, sir. No. Okay, so do this quickly. So in the chat box, I shared two publications. You can refer this publication for your preparing your case study, and maybe in the next lecture you can discuss to me. You are suggested to download this paper because maybe after the session will close, this will disappear. Any other query? Do you have any query there? For ligand screening, one of the student asked about how to create ligand screening and library preparation. So लाइब्रेरी प्रिपरेशन का मैं कम्युनिटोरियल लाइब्रेरी पढ़ा रहा था तो बताया था। और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो आपको डिफरेंट लाइब्रेरी दे सकते हैं बना करके। और मैनुअली भी अगर आप मान लो 100 250 ऐसे स्मॉल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप लाइब्रेरी बना। और वर्ते ऑटोडॉक बीना है या कई सारे हैं जो कि बैच में डॉकिंग परफॉर्म करते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। या ड्रग रेप मैंने बताया आपको, तो ड्रग रेप भी आप यूज कर सकते हैं। जो अभी ये टूल एक बताया ना, चल नहीं रहा है वो, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं।
पेपर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया? फ्रॉम द चैट बॉक्स एक पेपर अभी गया है, एक जो है अपलोड हो रहा है। तो आज का ये केस स्टडी कितना समझ में आया आपको? कुछ कॉन्फिडेंस आपके रेज हुए कि आप कर सकते हैं? कुछ नया सीखने को मिला आज के लेक्चर में? यस सर। यस। ये जो पेपर मैंने भेजा अभी आपको, इनमें ज्यादातर आपके तरह यूजी पीजी के स्टूडेंट्स के ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, जस्ट द थिंग इज कि रेडी टू वर्क। प्लान कीजिए अपने मेंटर के साथ और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Okay, so if there is no question, then we can close this session, and maybe we will interact soon. And next time when we will interact, then we must have some project in our hand. Okay, thank you so much for patiently listening me and a good discussion. थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर। थैंक यू सर।